जो है यानी अभिव्यक्तियों का जो उत्सव है उसमें हमारे समाज का वो हर वर्ग, क्योंकि हर वर्ग की हर व्यक्ति की अपनी अपनी संवेदनाएं हैं, उसकी अपनी अभिलाषाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, सपने हैं, व्यथाएं हैं। और उनकी अभिव्यक्ति चाहे वो साहित्य हो या कोई भी और माध्यम हो सकता है, उन सभी में बहुत सशक्त ढंग से होती तो है, लेकिन उसको जगह भी मिले, मंच मिले, लोगों तक पहुंचने का जरिया बन पाए कुछ ऐसा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और हमें बहुत खुशी है कि इस दिशा में, इस पर्सपेक्टिव के साथ, इस उद्देश्य के साथ जिन लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है, ख़ासतौर पर जो हमारी एलजीबीटी कम्युनिटीज़ हैं, उन्होंने उन अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं और अपने समुदाय की अभिलाषाओं या चुनौतियों को अपने साहित्य के माध्यम से, लेखनी के माध्यम से, अपने सोशल सर्विस के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया है। और हमें बहुत खुशी है कि आज उन्हें हमें यहाँ सुनने का मौका मिलेगा। इस सेशन को चेयर करने के लिए श्री होशांग मर्चेंट जी हम सबके बीच में हैं। और इसके साथ साथ रेवती मानवी, डॉक्टर मानवी बंदोपाध्याय, मृतिका चैटर्जी, संजना साइमन, वसुधेंद्र एंड विजय राज मल्लिका। तो तालियां एक बार मिलकर ज़रूर बजाएं। विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज लेट्स वेलकम ऑल द पार्टिसिपेंट्स, ऑल द पैनलिस्ट इन दिस सेशन। बिफोर वी स्टार्ट द सेशन, मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे साहित्य अकादमी की जो हिंदी परामर्श मंडल है, उसके पूर्व संयोजक प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी से सर आएँ और साहित्य अकादमी की तरफ से हमारे इन सभी पैनलिस्ट को, विद्वानों को, विद्वज्जनों को अंगवस्त्र भेंट करके उनका अभिनंदन साहित्य अकादमी की तरफ से, आप सबकी तरफ से करें। एंड होशांग मर्चेंट जी, ओके वी कैन स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड। विजय राज मल्लिका जी, आपकी तालियां बजेंगी तो अच्छा लगेगा सर। थोड़ा सा सॉरी, हाँ रेवती जी, रेवती जी, डॉक्टर मानवी बंदोपाध्याय, होशांग मर्चेंट जी जो कि सेशन को चेयर करने जा रहे हैं। सर साइड से थोड़ा प्रोफाइल फोटो के लिए, हाँ। मृतिका चैटर्जी, संजना साइमन, वसुधेंद्र, एंड विजय राज मल्लिका। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आदरणीय प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी का बहुत बहुत आभार। सभी जो हमारे पैनलिस्ट हैं और हमारे चेयर, मैं संक्षेप में उनके बारे में ज़रूर सबके बारे में बता दूं ताकि बीच में आवश्यकता ना हो और चेयर एज़ पर हिज रिक्वायरमेंट जैसे भी वो उसको कंडक्ट करना चाहेंगे। वैसे आप सब जानते ही हैं कि होशांग मर्चेंट जी एक कवि के रूप में, आलोचक के रूप में, संपादक के रूप में उनकी बहुत प्रतिष्ठा है, बहुत योगदान भी है उनका। आपके 25 कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं जिनमें फ्लावर टू फ्लेम और फॉरबिडन सेक्स, फॉरबिडन टेक्स्ट के साथ साथ जो समलैंगिक सिद्धांत यानी गे थ्योरी है, उस पर भी 5 कृतियाँ आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं। भारत के पहले गे एंथोलॉजी संकलन याराना, गे राइटिंग फ्रॉम इंडिया का संपादन भी आपने किया है। हैदराबाद विश्वविद्यालय और हेडलबर्ग सहित कई विश्वविद्यालयों में आपने अध्यापन का, टीचिंग का कार्य किया है। और आपके जो आर्टिकल्स हैं, कॉर्नेल विश्वविद्यालय, इथाका, एनवाई के कोच लाइब्रेरी, इन सब जगह इनको संग्रहित किया गया, कंपाइल किया गया है। रेनबो वॉरियर अवार्ड 2019 से आप सम्मानित हैं, बहुत सारे सम्मान मिले हैं। आपकी करतल ध्वनि के साथ बहुत बहुत वेलकम, स्वागत होशांग मर्चेंट जी का। रेवती जी ट्रांसजेंडर समुदाय की एक लीडर हैं, एक्टिविस्ट हैं, थिएटर आर्टिस्ट हैं और अपने करियर के जो शुरू का एक दशक था उसमें बहुत समय, लगभग इससे ज़्यादा की इनकी यात्रा हो गई 10 वर्षों से इस क्षेत्र में। जो यौन अल्पसंख्यक हैं उनके अधिकारों के लिए जो लड़ने का संगठन है संगम, उसके डायरेक्टर के रूप में आप अपनी सर्विसेज लगातार दे रही हैं। और बहुत सारे समय में, संकट के जो समय भी रहे उसमें, चाहे वो हस्तक्षेप के माध्यम से सामुदायिक जो गोलबंदी है या लामबंदी है,
उनके उनकी पर्सपेक्टिव को प्रेजेंट करने का अलग अलग मंचों पर आवश्यकता होती है, ट्रांसजेंडर्स की, दलित, आदिवासी, इन सब की। तो इसके लिए बहुत सारा जो एफर्ट है उनकी तरफ से होती रही हैं। आपकी 3 बुक्स जो हैं वो पब्लिश हो चुकी हैं, 3 नाटक भी आपने लिखे हैं और नियमित रूप से उनका मंचन भी होता रहता है, स्टेज भी होता रहता है वो नाटक आपके। आपका नाम कोलंबिया विश्वविद्यालय के बटलर लाइब्रेरी में माया एंजेलो और टोनी मॉरिसन जैसे लोगों के साथ भी वहाँ डिस्प्ले किया गया है, उसको प्रदर्शित किया गया है। सो वी वेलकम ए रेवती। डॉक्टर मानवी बंदोपाध्याय फर्स्ट प्रिंसिपल हैं भारत की ट्रांसजेंडर जो 3rd जेंडर की सदस्या, और डॉक्टर बंदोपाध्याय की 3 कृतियाँ, 3 उनके जो क्रिएशंस हैं, पब्लिकेशंस हैं, वो आ चुकी हैं, जिनमें उनकी अपनी जीवनी भी शामिल है, अ गिफ्ट ऑफ गॉडेस लक्ष्मी। 1995 से आप ट्रांसजेंडरों के लिए बांग्ला पत्रिका अब मानव, सब ह्यूमन, जिसको अंग्रेजी में आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, वो प्रकाशित कर रही हैं। और पश्चिम बंगाल सरकार के पश्चिम बंगाल ट्रांसजेंडर विकास बोर्ड की आप उपाध्यक्ष भी, वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं, और साहित्य अकादमी के बांग्ला जो परामर्श मंडल है हमारा, उसके पूर्व सदस्य भी हैं। वी वेलकम डॉक्टर मानवी बंदोपाध्याय विद ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, लेडीज एंड जेंटलमैन। वी हैव मृतिका। लगभग 10 वर्षों से बहुत सारे अलग अलग तरह के सोशल एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व हैं, और ख़ासतौर पर जो ट्रांसजेंडर समुदाय हैं उनके राइट्स के लिए आप लगातार स्ट्रगल करती रही हैं, संघर्ष करती रही हैं। कविता, कहानी, रिसर्च पेपर्स, लेख, आपके आर्टिकल्स, ये सब आपके प्रकाशित होते रहे हैं नियमित रूप से। ट्रांसजेंडर पत्रिका जिसका मैंने जिक्र किया, अब मानव, उससे भी आप जुड़ी हुई हैं, और पश्चिम बंगाल सरकार के ट्रांसजेंडर व्यक्ति विकास समिति जो है सरकार की, उसके आप मेंबर भी हैं, और कोलकाता के BMS स्कूल में सहायक शिक्षक के रूप में आप कार्यरत हैं, वहाँ अपनी सेवाएं दे रही हैं। तो स्वागत मृतिका जी का इस पैनल में। एंड वी हैव संजना साइमन ऑल्सो। संजना साइमन लव दाय नेबर ट्रस्ट, नई दिल्ली की संस्थापक निदेशक हैं, उसके फाउंडर डायरेक्टर हैं इस ट्रस्ट की। और आपने ईसाई धर्मशास्त्र में क्या इशू एक ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए आशा हैं, एक होप हैं, इसको लेकर आपने अपनी डॉक्टरेट जो है वो PhD जो है आपने पूरी की है। संजना ने 90 से अधिक कविताएं आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं, आ चुकी हैं, 5 कहानियां भी आपकी प्रकाशित हुई हैं, और आपकी 2 पुस्तकें, लाइफ ऑफ अ ट्रांसमैन और बॉलीवुडिया ट्रांसजेंडर वर्सेस पेनफुल रियलिटी, मेरा ख्याल है आने वाली है, पब्लिश होने वाली है। तो आइए स्वागत करते हैं संजना साइमन का आज के इस पैनल में। और वी ऑल्सो हैव वसुधेंद्र, बहुत ही रिनाउंड कन्नड़ लेखक, जिस रूप में वो जाने जाते हैं। 15 से अधिक आपकी बुक्स जो है आई थिंक पब्लिश हो चुकी हैं वसुधेंद्र। कर्नाटक साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी इनको मिल चुका है, और इनकी एक पुस्तक है मोहन स्वामी, जो समलैंगिक युवक के जीवन का एक बहुत ही मार्मिक और प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति है, उसका इतिहास है वो। इसका अनुवाद अंग्रेजी में किया गया, स्पेनिश, मराठी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, इन सभी भाषाओं में आपकी इस वो पुस्तक का ट्रांसलेशन हो चुका है। आप एक ट्रेंड काउंसलर भी हैं, और गे कम्युनिटी को मुफ्त में काउंसलिंग प्रदान करते हैं। आप लिंग भेदभाव पर दैनिक डेक्कन हेराल्ड या और भी तमाम अखबारों में नियमित स्तंभ जो है, रेगुलर कॉलम्स भी लिखते हैं। तो स्वागत वसुधेंद्र। इस सेशन में उनके डबल रोल है एक्चुअली, क्योंकि टाइम कीपिंग की जिम्मेदारी भी चेयर ने उन्हीं को दिया है। नाउ ही इज रेडी फॉर दैट, वेरी एक्साइटेड। वी हैव विजयराज मल्लिका आल्सो हियर विद दिस इन दिस पैनल, बहुत ही रिनाउंड मलयालम ट्रांसजेंडर पोएट हैं विजयराज मल्लिका। आपने आन नाधी, अ वर्ड टू मदर, पेन्ना यवलुदे कवितकाल, लिलिथन मरानमिल्ला, मट्टोरू पेन्नल्ला जान, ये पुस्तकें तो है ही हैं। इसके अलावा बड़ी इंटरेस्टिंग एक लोरी की जो सीरीज़ है कविताओं की पुस्तकें हैं, अन्नाला पेन्नाला कनमणि, आई थिंक वो भी आपने लिखी हैं, उसको पब्लिश भी किया गया है। आपका एक कविता संग्रह है देवथिंटे मकाल, मद्रास विश्वविद्यालय जो है उसमें उसके कैरिकुलम में उसे शामिल किया गया है। केरल स्वामी विवेकानंद युवा प्रतिभा पुरस्कारम, मथाई मंजूरन पुरस्कार, आपकी आत्मकथा जो है मल्लिका वसंतम के लिए लीला मेनन पुरस्कार, और केरल सामाजिक न्याय विभाग द्वारा जो है राज्य पुरस्कार आपको प्रदान किया गया है। तो आपकी तालियों के साथ विजयराज मल्लिका जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। इन सभी का वेलकम, स्वागत, अभिनंदन और निवेदन चेयर कर रहे होशांग मर्चेंट जी से कि वे इस सेशन को इनिशिएट करें अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स के साथ। थैंक यू।
The Academy includes the LGBT panel each year, which I'm invited to chair for a second time. And I thank the Academy for this, but I humbly ask that they don't give us such fancy titles. Just call us the LGBT panel. One way of accepting us is to tell us what we are and accept what we are. No need for fancy titles. Okay. Traditionally, the transgender people of India are connected with Friday and fertility by castration at Bahuchar Mata's temple in Gujarat. They are men who have withstood women and have a very high place in Hindu mythology, society, and culture. So we cannot say that transgender and all this is foreign. It is in our culture. As far as the sex change operation is concerned, it started when I was a student in America by Dr. Moni at the Gender Center of the Hospital of the Baltimore University, Johns Hopkins University in Baltimore, Maryland. He took cases and he changed boys into girls, and he followed them for 10 years. I heard him on the 10th year, and he said, I've followed them for 10th year, and these people are just unhappy people, and I've stopped doing the operation because the operation hasn't made them happy. This is what I know. And I'm talking about men or gay men who have this desire to be transgendered, who take this operation or who took this operation in the past in America. Now they are doing it in Telangana, in Andhra, for $4,000. It used to cost $40,000 in America 35 years ago. So let me talk. Anything you want to talk, I also support to you. whatever you want to talk, you talk afterwards. Okay? I am a gay man, Sudhendra is a gay man, the rest of the panel identify. Let me complete my sentence, do not interrupt. These people identify as transgendered people. I do not identify as a transgendered person. I identify myself as a gay man. Man, not woman. So this is what happened in America. Trans people under Lakshmi of Bombay have forced the Sadhu Samaj to include a new Hijra Akhada at Kumbh Mela for the first time in 300 years. Last month, a Hyderabad trans woman, Mowgli Vasanta, got the High Court of Telangana to reverse the British era Hijra Act, as it unfairly characterized the community as kidnappers and murderers of young boys. Thank you. But all of you have to remember that you get 9 minutes. Vasudhendra will ring the manjira and you have to stop mid-sentence. Otherwise, I don't get lunch. And I'm a gay man who is greedy and wants lunch. मेरा नाम रेवती है। इंडिया में पहले ट्रांस वुमेन को ट्रांस कम्युनिटी के बारे में किताब लिखा है 2004 में। ट्रांसजेंडर बोलेगा तो सब लोग क्या समझता है, खाली पुरुष से औरत बनता है उतना ही समझता है, लेकिन औरत से पुरुष भी पहनती है, वो लोग भी ट्रांसजेंडर लिखे, आप याद रख लेना। एक ट्रांसमैन का पोयम को पहला आप सुनो, बाद में पहली बार मेरे लाइफ में इंग्लिश में मैं रीड करने वाला है, 9 मिनट्स का अंदर ही होएगा। थैंक यू।
अस्तित्व मेरी एक गंदी कमीज जितनी, अस्तित्व मेरी एक गंदी कमीज जितनी, घूम घूम झटके खाती हुई। अस्तित्व मेरी एक गंदी कमीज जितनी, घूम घूम झटके खाती हुई। कभी इस कोने, कभी उस कोने, कभी फैली हुई, कभी डर के सिमटी हुई। डुबोया था मुझे इस दुनिया के मटमैले पानी में। कहा था उन्होंने कि सफाई है। डुबोया था मुझे इस दुनिया के मटमैले पानी में। कहा था उन्होंने कि सफाई है। ले बिछाया मुझे उस सूखी टमटमाती चट्टान पर। लगाए मुझ पर अपने ही रंग। ले बिछाया मुझे उस सूखी टमटमाती चट्टान पर और लगाए मुझ पर अपने ही रंग। तैयार किया मुझे बलिदान के लिए, तैयार किया मुझे बलिदान के लिए और घिस निकाला मुझ पर से मेरा अपना असली रंग। निचोड़ दी हर एक पहचान मेरी। निचोड़ दी हर एक पहचान मेरी। आज टंगा हूं मैं यहां, देखो आज टंगा हूं मैं यहां, मुस्कुराते हुए, चमचमाते हुए। लेकिन ये चमक ये चमक मेरी नहीं, ये मुस्कान मेरी नहीं। ये चमक मेरी नहीं, ये मुस्कान मेरी नहीं। अरे कौन हूं मैं, कौन हूं मैं? मेरी पहचान ही मेरी नहीं। Gay, lesbian, non-binary, gender fluid, and transgender are all marginalized people in generally. It is a false paradox that there is visibility to transgender who have openly come out in society and that they have all the right in every way. In an ideal world where everyone should have respect, opportunity, freedom, and self-respect. The transgender community goes through many years of struggle. They live a false life, living in hanging and being humiliated. They are subject to violation, dissolved, discriminated, wounded, and sometimes even died. In reality, life is not a fair game for the cure. Life is very difficult, and no one should have to live like this if there is much visibility for my people now. In my youth, I was unavailable to live in my own state and with my family. This is happening every today for my people, for our community. The self-identity of the transgender people is still a question mark, and because of their identity, they have to live away from their families, struggle to get their basic education, they suffer on the daily basis for shelter, food and medical help. The society also sees us as unfit to live and criminalized our ancestors. 9. Ali, Pombalaseti, Goja, Chekka, Mamu, Napumsuka. And so and these are the name to society has given us trans people. When we listen to the church word, there is no limit to our sorrow. But we are not think heart and even if the civil society has isolated and discriminated us. We have fight for our identity for with the same community. The victory of the struggle of seek our identity in a free country in the Supreme Court victory on this right to decide who we are.
Though we are happy with this historical victory in Indian story, we are still deprived of the right to work in education, property rights, and adopt a children on this basic our identity. Earlier, we used to ask for alms from shop to shop. Now, we go to the court to beg for our rights. Whenever we go out begging and operation against us continues, it is an ongoing incident where the families see us as courts. They reject and discriminate us. It is painful that society has not changed even though the law are somewhat favorable. Our education has been affected by the rejection of families. There is no other way to find a job due to the impact of the lack of education, and ultimately we are forward to beg and to sex work. Suicide and euthanasia are continuously carried out in the name of love and to preserve the family's honor. The world like to given you example what happened in my life. मैं सेक्स वर्क किया था, वो पैसा पूरा मेरे पिता को दिया था. मेरे पिता ने क्या किया, ओल्ड घर को नया घर बना लिया और मेरे नाम पे विल भी लकी दिया. और भाई लोग जाको बोल रहा था, ये सिसमैन है, इसका औरत नहीं है, बाल बच्चा नहीं है, क्यों इसको घर दिया. फिर बाप ने बोला खाली नाम का वस्ते लिया उसको, बाद में मेरे पोता का नाम में मैं लिखेंगी. फिर मैं पैसा दिया ना, उसके मतलब क्या है, कौन सी पैसा, कभी दिया, कौन सा चीज, ऐसा बोल दिया. इतना गुस्सा से घर में 15 लीटर गैस लीटर था, वो पूरे में डाल दिया. उसी दिन मेरा हाथ में मार्क्स बॉक्स होती तो मैं आज जिंदा नहीं रहती थी. ये खाली एग्जाम्पल एक है, बहुत एग्जाम्पल है ऐसा. और हम लोग लिटरेचर बन गया, आजकल हम राइटर बन गया. फिर भी सिसमैन हम बोलते हैं ना, वो लोग को अपना बारे में कोई लिखेगा तो अवार्ड मिलता है, औरत कोई लिखे तो अवार्ड मिलता है, लेकिन हमको रिकग्निशन राइटर्स को नहीं मिल रहा है. Okay, Reti, you have to stop. Thank you now. so much. You have to stop now. There is a request from the audience. If Sri Lanka's delegate is present here, please come to the dais. Somebody wants to contact him. The next is Manabi. Thank you, Reti. Sorry. पहले साहित्य अकादमी के बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत श्रद्धा जहाँ में कि मैं को एक मौका दिया, एक सुजोग दिया ये बोलने के लिए. ऐसे बात चलता है तो मैं कैसे बात करूँगी सर. तो साहित्य अकादमी को धन्यवाद दे रहा है अभी. तो साहित्य कौन सा साहित्य है, साहित्य का डेफिनेशन क्या है, जो साहित्य में साथ से रहते हो वो साहित्य है. आज जब मैं इधर आ रहा है तो हुसैन मर्चेंट के देखे, मर्चेंट ऑफ वेनिस को बात याद आते हैं, किंतु वो 9 मिनट्स टाइम फिक्स कर दिया. तो 9 कौन सा है, माँ दुर्गा का संख्या है 9, नवरात्रि है. हम लोग सब जानते हैं माँ दुर्गा हमारे माफिक एक महिला है, वो ट्रांस वोमन है. उनका जो संतान है, तीनों पुरुषों से माँ दुर्गा का जन्म हुआ, कोई माता से नहीं जन्म हुआ, ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर. तो मैं इसे सोचते हैं कि मैं खुद माँ दुर्गा है, तो इसलिए जो 9 मिनट्स टाइम वो अचानक सजेस्ट किया, ये हमारा नवरात्र के साथ मिल गया. 9 मिनट्स टाइम, थैंक यू. बाकी मैं सोचते हैं हमारे माँ दुर्गा का जो अभी जो शासन करते हैं हुसैन जी, वो हमारे वाल्मीकि है, और वसुंधरा जो उनके पास है वो कालिदास है. वो ठुंग ठुंग करके बजाते हैं जो 9 मिनट हो गया.
तो ऐसा हमारा कपाल है, इसे हमारा भाग है, ऐसा हमारा फॉर्चून है कि हम लोग ट्रांसजेंडर है, तो हमारे को मैं को शासन करते हैं दो गे पीपल। ये बहुत खेत का बात है। ट्रांसजेंडर के लिए सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट दिया, कोई एलजीबी के लिए कोई वर्डिक्ट नहीं दिया। अभी सुप्रीम कोर्ट में समकामी लोग लड़ते हैं, वो लोग जानते हैं कि हम लोग समकामी है, नहीं, हम लोग विषमकामी है। वो यहाँ क्या है, मतलब हमारा आफ्टर एसआरएस हमारे एक वजाइना है, बूब्स है, हम लोग खुद लड़की बनने सकते, नॉट क्रस्टेटेड। हमारा वाल्मीकि बोला है क्रस्ट्रेशन, वो ये अमेरिकन का बात है क्रस्ट्रेशन, ये हमारा भारत का बात नहीं। भारत का ट्रांसजेंडर का सम्मान मिलता है, ट्रांसजेंडर का वर्डिक्ट मिलता है। अभी 10 बरस हो गया, वर्डिक्ट तो आया, बाकी क्या हुआ है, हमारा उन्मेष हो कि हुआ नहीं। हम लोग मेष बन गया, उन्मेष नहीं हुआ अभी तक। मेष मीन भेड़ा, उत्कर्ष नहीं है, हम लोग उन्मार्गोगामी हो गया। क्या है ट्रांसजेंडरों का, क्या बोल रहे हैं आपका, क्या कोई उत्कर्ष है? नहीं, हमारा उत्कर्ष कोई नहीं है। मैं और क्या है, वसुधैव कुटुंबकम। ये जो वसुधैव कुटुंबकम, सब वसुधा में आप लोग सब नारी पुरुष कुटुंब है, हम लोग अलग है, हमारा कोई कुटुंब नहीं है। वसुधा हमके अलग कर देते हैं, हमारा खुद अलग वसुंधरा करते हैं, जिधर ओनली फॉर ट्रांसवुमेन का वसुधा होता है। तो क्या है, हमका कोई कुटुंब नहीं, बट कूटबाद बोल रहा है, नहीं कुटुंब नहीं बोल रहा है, कूटबाद बोल रहा है। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट जब मिला, उसके बाद क्या है, बहुत यूनिवर्सिटी यूजीसी का बहुत ग्रांट हो गया। उस सब सारी जो मेन स्ट्रीम प्रोफेसर है, मेल प्रोफेसर और फीमेल प्रोफेसर, वो सब हमारे पास आ रहा है। हम लोग रिसर्च करने के आपका पास आते हैं, हमको पीएचडी होते हैं, तो बहुत सारी गवेषक आ रहा है। ये हमारा पाठ्यों में ट्रांसजेंडर के लिए कार्यक्रम बना चुका है, लेकिन ट्रांसजेंडर का कोई अभी खुद ट्रांसजेंडर का कोई उन्नति अभी तक हुआ नहीं। हम लोग कोई विजिबिलिटी नहीं, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में बहुत सारी ट्रांसजेंडर स्टूडेंट बन के जाते हैं, वही खाता लेकर जाते हैं, और ट्रांसजेंडर लोग खुद गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं, ये अभी तक नहीं, हमारा नज़र में नहीं आ रहा है। आपका आया है कोई? आपका है कि इधर ना सिग्नल में जो ताली बजाते हैं उसका संख्या बढ़ जाते हैं, और हमारे जो शिक्षित समाज है अभी हम लोग फूल लगा के आते हैं। क्या है, हाँ, मैं कल्की और रेवती और मल्लिका, संजना, ये सब क्या है, ये एक एक स्टेट का रानी है। तो ये रानी है, रानी मधुमक्खी है, या सब श्रमिक मधुमक्खी जो है वो लोग सिग्नल में भीख मांगते हैं। ये ठीक नहीं, ये वो एक अल्सो ये एक वैषम्य है, तो ये वैषम्य घुचाने पड़ेगा। और है कि हम लोग ट्रांसजेंडर साहित्य अकादमी चाह रहा है, मैं खुद चाह रहा है ट्रांसजेंडर साहित्य अकादमी। दलित अकादमी जैसे हो रहा है वैसे कहे नहीं ट्रांसजेंडर साहित्य अकादमी हो रहा है। कभी ऐसे होते हैं, आईए आते हैं, एआई आते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आ रहा है अभी हमारे सोसाइटी में। तो आर्टिफिशियल वोमेन, आर्ट एंड फिशी ऑल्सो, आई थिंक माई सेल्फ आर्ट एंड फिशी। तो कैसे नहीं आर्टिफिशियल वोमेन के लिए कुछ नहीं हो सकते, होगे भविष्य में ऑफकोर्स होगे। और क्या है, हमारे जो कष्ट है, सरकार कभी डायरेक्टली हमारे साथ नहीं काम करते हैं, थ्रू एनजीओ का मार्फत काम करते हैं। एनजीओ क्या करते हैं, हम लोग को हाथ में कंडम और केवाई जेली दे देता है, जो तुम लोग सेक्स करो, सेक्स वर्कर। एनजीओ क्या करते हैं, कम्युनिटी को सेक्स वर्कर बनाते हैं, जैसा लड़की लोग को बनाते हैं। और सर बोला नहीं किडनैप होते हैं, कौन सा किडनैप कर रहा? किडनैप तो आपका मेन स्ट्रीम सोसाइटी कर रहा है। हम लोग तो क्या है, हम लोग तो बहुत वीकर सेक्शन है, हम लोग दुबल है, हम लोग चला जाता है सेक्स वर्कर का काम करते जाता है। आप लोग तो सेक्स वर्कर काम के खोल देते हैं। तो ऐसे पहले सोचो, मैं जानते हो निर्वासन एक
आशीर्वाद है हमारे लिए। जैसे वाल्मीकि का निर्वासन होने के बाद वाल्मीकि रामायण रचना किया, तो साहित्य तो वैसे ही है जो निर्वासित होते हैं, जो मेन स्ट्रीम में रहते हैं उसका पास कोई साहित्य नहीं आते हैं। रत्नाकर जो मेन स्ट्रीम में है वो कभी नहीं रामायण लिखे सकते। रत्नाकर जब वाल्मीकि है साधना किया, निर्वासित हुआ मेन स्ट्रीम से, उसके बाद रत्नाकर रामायण रचना किया। मेरा नवरात्रि के अष्टमी हो गया, 9th में मैं प्रदीप जलाने के लिए सबके शुभेच्छा बांट के चल रहा है। नमस्ते। Next is Mitrika. Mitrika is next. I'm Ritika from Kolkata. Now I'm presenting my short speech in Bengali literature LGBTQ. The recent progress in inclusion of LGBTQ contents in Bengali literature or by authors having Bengali language have shown a significant upward trend. Some literary features had been creeping for a wild journey. From same discrete opening to literary flow, encapsulating all possible verses of LGBTQ outlook towards a gender life. Individuals and social. In modern Bengali literature in 1856, one would observe Jogendra Chandra Chattopadhyay introducing a homosexual plot between two friends. Dui Bondhu, or two friends. In 1925, Nilima Bosu wrote a story, Jora Phul, revolving around a homosexual relation in one of the volumes of the famous magazine of Kollon. Famous Bengali literary Shiboram Chakraborty wrote A Chele Boyesh in early days. This also incorporated gay relation. In the post-independent era in 1951, in Chaturanga magazine, Kamal Kumar Mojumdar wrote Mollika Bahar, where lesbian relation has the theme of the story. Slowly but steadily, in mainstream Bengali literature, LGBTQ space would make its inclusion, which was invisible as a movement regarding alternative sexuality, gender fluidity, right, sexual love, etc., were happening in different layers of the literature has been knocked repeatedly throughout different literary work of Sunil Gangopadhyay, Shamsur Rahman, Imdadul Haq Milan, Somoresh Mojumdar, Shapnomay Chakraborty, Taslima Nasrin, Dr. Manobi Bandopadhyay, Tilottama Mojumdar, etc. But most interesting this in the phase of debate of regarding of heteronormativity, the different fact of the struggle of a transgender and queer person. The imagination of this person beyond different patterns, different set patterns within the society or a intersectional interaction among caste, class, gender, sexuality, religion, etc., are becoming the core subject of trans and queer authors. This is the heteronormative practical core. Dr. Manobi Bandopadhyay started the first trans magazine, Abomanov or Subhuman, which is running successfully for a long time. A gift of Goddess Lakshmi by Dr. Manobi Bandopadhyay, The Ministry of Utmost Happiness by Arundhati Roy, A Life Apart by Neil Mukherjee, The Magical Place by Kunal Mukherjee, etc.,
are paving the way of the more serious search for a better literacy outlook. Different experiments are running in difficult concern in Bengal. Last but not the least, the name of the person must be uttered in the regard, that is Rituparna Ghosh, a transgender person bringing down the contemporary social events along with the person unbringing the heteronormative society in the fluent and unique literary style in the working, gaining the popularly where never throughout the before. The first person by Rituparna Ghosh was such a remarkable work with which should have been discussion more than it happened. Then now I'm presenting my own poem. In Bengali, then I am সীমাহীন আকাশ, আকাশের কোনো সীমা নেই, সীমাহীন আলোকের প্লাবনধারা, ভালোবাসা কোনো সীমান্ত মানে না, পরিচয় কেন তবে সীমানা টানা। মনে রেখো বর্ষণসিক্ত আকাশের রামধনু কিন্তু তোমায় টেনে ধরে, তবে ডানা কি সেই রামধনুর মেলতে ইচ্ছা করে যে রামধনু আছে তোমার অন্তরে। এর ইংলিশ মিনিংটা আমি বলে দিচ্ছি। দ্য লিমিটলেস স্কাই ইজ অ্যাট্রাকটিভ to every world citizen. The eternal flow of the light in the lightless sky in grandeurs. In the same way, love does not obey any frontier. So it is useless to draw a dividing line between heart and heart. Remember the rainbow after a soft shower, but it hugs you with all its colorfulness. A bird's passion is to mingle with the 7 colors of the rainbow. The rainbow lives actually in your inner mind. Thank you. Sanjana is next. मंच पर आसीन आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरे सभी लेखक मित्र एवं सभागार में उपस्थित सभी साहित्यिक रसिकों का मैं संजना साइमन पूरे प्यार, सम्मान और गरिमा के साथ स्वागत करती हूँ। मैं तब से लिख रही हूँ जब से मैंने होश संभाला और किसी दोस्त या रिश्ते के अभाव में अपने आप को कागज पर उतारना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मैं अपने आप को कागज पर उतारती गई, मुझे महसूस होता रहा कि मैं भी जिंदा हूँ। होगा साहित्य सबके लिए विचारों या भावनाओं की अभिव्यक्ति, पर मेरे लिए लिखना मेरा परम मित्र बन गया। साहित्य की सबसे अच्छी बात यह है कि यह स्वतंत्र है। यहाँ हर विचार का स्वागत है। यहाँ कोई दोष नहीं लगाता। तुम क्या लिख रहे हो, क्यों लिख रहे हो, ये गलत है, ये सही है, जिन सबको मैं बचपन से सुनती आ रही थी। साहित्य के रूप में एक मित्र मिला, सब्र और शांत, जो सुनता है, समझता है, स्वीकृत करता है। और बहुत बहुत धन्यवाद साहित्य अकादमी को कि उसने साहित्य की इस परंपरा को हम लोगों को बुला के और जान डाल दी है। अपनी कुछ कविताओं के साथ आप सभी रसिकों को आनंद प्रदान करने की कोशिश करूंगी। सुबह की बात है या रात का है जिक्र, दिल का होना और उसमें तेरी फिक्र। तुझे देखती हूँ, देखते मुझे, देखे दुनिया। तुझे देखती हूँ, देखते मुझे, देखे दुनिया। खामोश हूं तो ये ना समझना कि सच में खामोश हो गई हूं। ये होंठ चुप है पर आंखें आवाज रखती हैं। ये मुस्कुराहट भी देखो एक गूंज है जज्बातों की। तुम ना समझो ये मेरी समझ से बाहर है और तुम्हारी इस समझदारी को मेरी नासमझी का इंतजार है।
उसूल दुनिया का पसंद है तुझे, उसूल दुनिया का पसंद है तुझे, तेरी दुनिया में दिल भी तो है। दिल को दर्द दे दुनिया को खुशी, अरे जालिम दिल को दर्द दे और दुनिया को खुशी। ऐ इंसान ये कौन सा नया सबक है। तेरे जफाओं पे फना मैं बार बार हो जाती हूँ, तेरी दी तकलीफ को मैं सिंदूर समझ मांग से लगाती हूँ। होगा तेरा बड़ा नाम सब जगह बहुत मशहूर, मैं तो गुमनामी में भी तेरे ख्याल से खुश हो जाती हूँ। तू कहता है यही कायदे हैं मोहब्बत के, तू कहता है यही कायदे हैं मोहब्बत के, मैं तेरे कायदों में छुपे तेरे फायदे जानती हूँ। एक लड़का मोहब्बत करता है एक ट्रांसजेंडर से और अपने माता पिता और समाज के बारे में सोच के थोड़ा रो के और चला जाता है। ये नहीं सोचता है कि हम भी तो इंसान हैं, अपना सब कुछ समर्पित कर दिया तुझे, तेरी मोहब्बत को। तू कहता है यही कायदे हैं मोहब्बत के, मैं कायदों में छुपे तेरे फायदे सुनती हूँ, समझती हूँ, फिर खुद पर हंसती हूँ और तेरे बताए कायदों में रोज मरती हूँ और मर मर के अपनी जिंदगी जी लेती हूँ। सच है कि कायदे इंसान की देन है, सच है कि कायदे इंसान की देन है, पर मोहब्बत तो बेकायदे होती है। हवा बादल बारिश भी तो बेकायदे है, भला रब की नेमतों की भी सरहदें होती हैं। धन्यवाद। एक दूसरी कहानी है, यहाँ बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है, कौन गे है कौन ट्रांस वुमेन मैन, थोड़ा सा बताना चाहूंगी। जन्म के समय औलाद पैदा होती है, स्वतंत्र अभिव्यक्ति के साथ उन्हें बढ़ने दो, परेशान मत हो, निश्चिंत रहो, वो लड़का या लड़की ही बनेंगे, फिर कोई ट्रांसजेंडर नहीं बनेगा। ट्रांसजेंडर इसलिए बनता है क्योंकि पैदा होते ही बोल दिया जाता है कि लड़का पैदा हुआ है, लड़की पैदा हुई है, और फिर हम लोग सारी जिंदगी ये कोशिश करते रहते हैं कि नहीं मम्मा लड़की पैदा नहीं हुई थी, लड़का हुआ था, और लड़का नहीं लड़की हुई थी। तो जन्म के समय औलाद पैदा होती है, स्वतंत्र अभिव्यक्ति के साथ उन्हें बढ़ने दो, परेशान मत हो, निश्चिंत रहो, वो लड़का या लड़की ही बनेंगे, फिर कोई ट्रांसजेंडर नहीं बनेगा। आप खुद ही खुद के बनाई रूढ़िवादी बक्से में औलाद को पालते हो, उन्हें खुद की समझ और सोच से लड़का या लड़की बना देते हो, और जब वो औलाद खुद को आपके उस कब्रनुमा बक्से में कैद पाती है और छटपटा के जब उसे तोड़ती है तो आप उसे ट्रांसजेंडर बना देते हो। कोई ट्रांसजेंडर खुद से नहीं बनता, बल्कि ट्रांसजेंडर होता ही नहीं है। सच है खुदा ने सिर्फ नर और नारी को बनाया, सबसे पहले नर, फिर नर से ही नारी को बनाया, बाकी सब तो समाज की दकियानूस सी परंपरा, इंसान की नासमझी और परिवार की कट्टरता ने बनाया। एक बार फिर से नर से ट्रांसजेंडर नहीं बल्कि नर से नारी बनी हम सब की आवाज अवाम तक। जब उसने पूछा, एक छोटी सी कविता है, मेरे दिल के बड़े करीब है। एक दिन वो मिली, पूछा मुझसे कैसी हूं मैं। मैंने हैरान होकर कहा, तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो, तुम तो मेरी परछाई हो, जानती हो मुझे अच्छे से, फिर क्यों ऐसे बन रही हो। वो फिर भी पूछ रही थी कि कैसी हूं मैं, क्या कुछ हुआ है मुझे। मैं हैरान सी समझ ही नहीं पा रही कि ये कैसे सवाल है जो मेरी परछाई मुझसे पूछ रही है। मैंने एक बार फिर से कहा, अजी तुम तो मुझ में ही रहती हो, क्यों मुझसे अनजान सी बन रही हो। उसने इस बार सवाल नहीं बल्कि जवाब दिया, मैं हूं तुझ में जरूर, फिर भी तुझसे अनजानी हो गई हूं। मैं तेरे साथ चलती हूं तेरे उजालों में, तेरे अंधेरे को आज तक नहीं जान पाई हूं। तुझ में हूं तो सही, तेरी मुश्किलों से अपनी पहचान न कर पाई हूं। तू लगती तो संजना साइमन जैसी ही है, पर तेरे वजूद से अपना रिश्ता नहीं जोड़ पाई हूं। बेशक मैं हूं तुझ में जरूर, फिर भी तुझसे अनजानी हो गई हूं। मैंने गले लगाकर अपनी परछाई से कहा, तू उजाले की साथी, खुशियों की गवाह है। तू जिस अंधेरे से डर के मुझे छोड़ देती है, वो अंधेरा काला जरूर है, पर वो ही मेरी कक्षा है, जो सिखाता है मुझे, तराशता है मुझे, बनाता सजाता चमकाता है मुझे। तेरे समान ही सब मेरे अपने मुझसे पूछते हैं कि कौन हूं मैं, क्या हुआ है मुझे, क्योंकि मेरे अपने भी तेरे समान मेरे उजाले के साथी है। मैं खुश हूं, निखर रही हूं, आगे बढ़ रही हूं, मैं जिंदा हूं,
और जिंदगी को जी रही हूं। अंधेरे से डरती नहीं हूं, अंधेरे में ही तो चमकना सीख रही हूं। कोई ताली बजाना भूल जाए तो इससे बड़ी दात कोई नहीं। एक छोटे से प्रोज के साथ खत्म करूंगी। यहाँ पे एक किन्नर को जो कि ट्रेन मांगती है, उसको एक महेश नाम का क्रिकेटर जो कि ट्रेन में मोहब्बत करता है, सपने दिखाता है, और फिर उसकी माँ को हार्ट अटैक हो जाता है, तो वो छोड़ के भाग रहा है। और देखिए विडंबना उस किन्नर महिला की। सुनो, एक बात कहूं, तुम आ जाना, मैं तुम्हारी ही रहूंगी। तुम्हारा नाम नहीं चाहिए, बस तुमसे जान पहचान चाहिए। शादी नहीं तुमसे, इंसान होने की वफादारी चाहिए। और हाँ, अपनी माँ का ख्याल रखना, उनकी मर्जी से ही शादी करना। 2.5 आखर प्रेम के, एक आखर तुम रख लो, एक उसे देना जिसके लिए मुझे छोड़कर जा रहे हो। जो बचा आधा, वो मुझ अर्ध का नसीब। ये सुनकर महेश अपने आंसू न रोक पाया। शायद किस्मत को यही मंजूर था। महेश चला गया और रानी उसे जाते हुए देखती और अपनी किस्मत का लिखा जहर फिर हंसकर पी जाती। यही तो है जिसकी उसे आदत हो गई है। रोज गाजियाबाद से आती ट्रेन को वो देखती और हाथ बढ़ाकर उस ट्रेन की तरफ इशारे से कहती, मैं तुम्हारी हूं, तुम्हारी ही रहूंगी। मैं आधी ही सही, मुझे मेरा आधा अक्स लौटा दो। मैं भी पूरी हो जाऊंगी। सुनो ए पूर्ण मर्द और औरतों, सुनो ए पूर्ण मर्द और औरतों, मैं आधी ही सही, मुझे मेरा अर्ध लौटा दो, मुझे मेरा अर्ध लौटा दो। Next is Sudhendra, and who's going to clap for you? Okay. Respected chair, fellow speakers, and the august audience. I was being given the responsibility of giving the message, right? And rightly she called me as Kalidasa because Kalidasa has written Megha Sandesh. He knew how to send the messages through the clouds. So I'm thankful to you. Okay? And I feel the name given to this particular festival, Unmesha, is very appropriate. Unmesha means opening up your eyes. I think it's an opportunity to everyone here to open up their eyes and see there are people who have not been seen by you till now. We have kept them in Nimisha, closing the eyes. We have never seen them till now. This is an opportunity. Please open up your eyes and look at them. What I would like to do is, I do counseling a lot. A lot of gay men come for my counseling. I do both online and as well as offline. One of the young man who is hardly 25 or 26 years, he had come to me recently, and unfortunately he was diagnosed with hepatitis B. Right? So hepatitis B is an STD, and it's not that difficult. It's controllable, but throughout the life he has to manage. He has done it because he has not gone for a safe sex, right? So, and I asked him, why didn't you go for the safe sex? It's always you have to go for the safe sex, right? Why didn't you go? The person who had come to my house on that day was a big position. He was in a very big position in an IT corporate house, and he was wearing expensive clothes, and he was having a nice foreign perfume. So I thought he might be hygienic. It will never happen. And then he told me one more thing. See, I'm a film goer. He's a cinephile. So he goes to films regularly. So they show me tobacco chewing is dangerous every time. I wish they had shown me an advertisement which talks about this hepatitis B and the dangers associated with it. I would have saved my life in a much better way. What does it mean? There is a lack of knowledge. There is a lack of knowledge in all the LGBT crew. Because when there is no knowledge, when there is a lack of knowledge, then the phobia starts.
a phobia becomes so high that you start doubting about your own identity. Leave the phobia with the heterosexual community. The phobia, the homophobia which is there within us, within the LGBT community itself is so dangerous. So what I really look for the literature, what is going required for us is very clearly a fantastic and accurate knowledge base. Knowledge base which is accessible to everyone. What do I mean by knowledge base accessible to everyone means? I don't want it in English. English, they have created a lot of knowledge base. We don't want it in English. We want it in Indian languages. I want it in Kannada. I want it in Tamil. I want it in Hindi. I want it in Gujarati and Bengali. If you can create knowledge base, this is going to help a lot of people. First I said it's the gay man himself or the LGBT community itself. And the second is, please introduce that knowledge base to the high school and college goers. Because that is the time when a boy who has got an effeminate nature, he gets bullied. He gets bullied so much, it impacts him to stop his education in the halfway. Or he might not be successful in his education because always what bothers him about is his identity. And no one is there who can support him. Believe me, there is a fancy statements many tell that this kind of gay and lesbian and all these things are copying of a Western culture. Absolutely nonsense. It is very much an Indian thing. And I, born in a small village, who had my sexual encounter at the age of 16. At that time, I had never gone outside my village or my district and never seen any foreigner. So it's 100% Indian, never have that ideas of saying that it has come from the foreign by copying the Western culture. And the other third person who require this knowledge base is teachers. Teachers themselves bully the students if they are effeminate. I still remember my teacher who asked my friend was very effeminate in my class, when we were discussing about a drama, Draupadi Vastrapaharana, he laughingly said that he should take the role of Draupadi because he acts like a woman. Right? So this needs to be stopped. So that's very, very important. And the third people who require this knowledge base is doctors, psychiatrists, and psychologists. Believe it or not, most of our medical staff, the psychiatrists and psychologists, they are homophobic. They don't have that knowledge at all. LGBT knowledge. When I went with a great depression, with a clinical depression to a psychiatrist who was a very hardcore Catholic, he said, unless you stop your gay activities, you are not going to be recovered. So bad for a doctor to tell that to an individual. And there are many doctors who tell parents that he can be easily converted from a gay attraction to a heteronormal attraction. And they start suggesting so many procedures which are harmful to the body and the mind of an individual. Please be aware of that one. And other than this one, we talk so much about when LGBT comes into picture. Generally what happens is immediate thing which flashes in our mind is trans woman. We always associate the LGBT with the trans women only, including the government, both left and right. But there are other people. Why it happens? There is a gay man, there is a lesbian, there is a trans man. Why don't we talk about them at all? The reason is our religion has identified the trans women very well. They have given them the roles. They have a role even in the religion activities, whether it is in North India, in the South India. In South India, we have this Devadasi culture, Jogati culture. They come during the festivals and they will do a lot of activities. They are part of our culture.
But when it comes to a gay man or the lesbian or the trans man, we don't have any religious sanctity. That is the reason why we are ignoring the other community and we are assuming LGBT means it's only the trans woman. That mindset has to be changed with the government. And I have very little time. So the last one which I would like to raise, the LGBT doesn't stop only with the lesbian, gay, trans and other things. We need to talk about the wife of a gay man. There is a lot of problem there. What happens is, gay men at an young age, because of the societal pressure and the parents' pressure, he goes for the marriage. And at that young age, it will be very easy to have sex with either gender generally. So he will have sex and she will become pregnant and she will have a kid as well. Afterwards, he loses interest with his wife. Now what's going to happen is, because he has lost a wife, but he knows the ways to handle his sexual life outside the marital the boundaries. He goes outside and he will have his sexual life, whereas the wife of a gay man suffers throughout her life. There might be many women like that. Please open up and write your experience of what exactly is being a wife of a gay man and how you have suffered because of that. That is also part of the gay culture. Thank you very much. I have many more things to say, but I accept the message and I would like to thank the Sahitya Academy for giving me such a wonderful opportunity to express myself on behalf of LGBT. Thanks a lot. Bye. Thank you. Thank you. Next is Malika. Hello, namaste, namaskaram. Myself, I'm Vijayaraj Malika from Kerala. Today, I'm here to present my bilingual poetries. To be very frank, I feel so much proud for being part of this Unmesha 2023, the second time that I'm been to Unmesha and first time in Bhopal. So let me start with, we speak a lot of feminism, we speak a lot of women emancipation and women empowerment. So let me pose a question. How many mothers, how many women are ready to accept their intersex children? To be very frank, I'm an intersex person, born with a chromosomal variation of 47XXY and a very proudly living as an intersex person inside my family, inside my country, inside my state, everywhere. So to start with, let me have a poem that is of course in Malayalam. It means pebbles in English. The poem goes like this. Sastanigal adunnu, malsingal chiragadicha neendunnu, പക്ഷി മൃഗാദികൾ പാടുന്നു, മരങ്ങൾ ചില്ലകൾ നീട്ടി ചിരിക്കുന്നു, പാവ മനുഷ്യരോ ഇടകലർന്ന ലിംഗത്തിൻ്റെ പേരിൽ നവജീവനുകളെ തെരുവിൽ തള്ളുന്നു, ആൾക്കൂട്ടങ്ങൾക്കൊപ്പം ചേരുന്നു, ഉരുളം കല്ലുകൾ വാരി വാരി എറിയുന്നു. This is my first poetry, and let me just continue with this. We have a very good language in India. We have even Academy has brought nearly 103 languages here in Unmesha. But how many languages are sensitive towards the queer community in India? That is, of course, a great question, because we know that how even the trans people, how the intersex people, or even the LGBTI people are being addressed in the country. So this is a poetry regarding the need of inclusiveness. Let me start with, this is a Hindi poem. भाषा से चोट लगने पर, सीने में चाकू मारने से भी ज्यादा दर्द होता है भाषा से हृदय को तोड़ने पर. नर या मादा होना या दोनों से अलग होना, यहाँ तक एक मनुष्य जन्म भी किसी का चुनाव नहीं है. फिर भी तबातोड़ पत्थर फेंक रहा है, धोखे दे रहा है और मजाक उड़ा रहा है. We have to be very sensitive when we use our language, especially when we are proudly living in a society. And of course, this is a request to the government of India to include at least a small portion about queer community, especially on intersex, gay men and transgender in the NCERT or the ISSC syllabus that we learn. Because if a 2-mark question is being asked in an examination, I'm sure
none of us will be thrown away from the society, especially from education and employment. Also, we stand for horizontal reservation. This is a plea to the government of India that, see, we speak a lot of equality. Let me ask you, are we equal? No. How can we be equal when there is no equal opportunities? So we should stand for gender justice first. When gender justice comes, then only we can have the social equality or the gender equality. So this is my pleasant request to the Government of India and also to the Sahitya Academy. Please include these 2 points in creating a more inclusive society for trans and intersex people and also for the queer community. And to be honest, we come from a very historical background, but where are our histories being depicted? Obviously, we have Khajuraho very near to our place, or many other inflicts are there. But why this has not been put into textbook? That's a big question. In Kerala, we have done a lot, but in India, we need that these lives are being depicted, at least with certain kind of glossaries, to make it know that we all exist and this is a society for everyone. So let me go with one more poetry, that is Newborn, which has come in my English poetry collection, A Word to Mother. Very small poem. It's Newborn. Newborn is neither boy or girl. I repeat, newborn is neither boy or girl. It is only a baby where gendering is a hobby. I repeat, newborn is neither boy or girl. It is only a baby where gendering is a hobby. One more poem, that is A Word to Mother. Son may turn out to be a daughter and vice versa. A word to mother, accept your children as they are. None other can play your role as perfectly you are. And few of the poetries of this book is also incorporated in the syllabuses of Kerala Open University. And I'm so happy that my Hindi book is being published by Vani, and it is on the way. I believe it comes in this September 2023. And the title of the book is Maine Tumhara Kya Bigada Hai. So if time permits, I will just have a Malayalam romantic poetry. It is Vijagiri. എൻ്റെ നനവുകളെ നിന്റെ നിലവുകളോട് കോർത്ത വിജാഗിരിയെ പ്രണയമെന്നു ഞാൻ വിളിച്ചോട്ടെ. നിന്റെ കരുത്തുറ്റ ഇഴകളിൽ തിങ്ങിത്തുളുമ്പിയ നിർവൃതി, ജന്മാന്തരങ്ങളുടെ അടരുകളിൽ നാം കരുതി വെച്ച വീഞ്ഞിനേക്കാൾ വീറുള്ള ജലകുംഭങ്ങളല്ലേ. കാറ്റ് വന്ന് പിറകോട്ട് വലിക്കുമ്പോഴും നിന്നിലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിക്കുന്ന ആർദ്രതയുടെ ആവിഷ്കാരങ്ങളല്ലേ. അയഞ്ഞും വലിഞ്ഞും നാം പങ്കുവയ്ക്കുന്ന നിറമില്ലാത്ത രേണുക്കളെ, ഹൃദയ കാവ്യലതികകളെ ഇനിയ ഗാനമാക്കി നാം ഇനിയും ഒന്നായി പാടുകില്ലേ. പാടിത്തളരുമ്പോൾ ചങ്കിടറുമ്പോൾ സ്മൃതികളുടെ എണ്ണ കൊണ്ട് കാലം നമ്മെ പുൽകുകില്ലേ. നിനക്കായി അടയുവാൻ നിന്നിലങ്ങനെ ഒട്ടിക്കിടക്കാനാകുമെങ്കിൽ തിരശീലകൾ അറിയാതെ ചുവരുകൾ തുളയ്ക്കാതെ നാം എത്ര മൗനരാഗങ്ങൾ മീട്ടുമായിരുന്നു. ഒരു വെളിപ്പാടകലെ ഇരുന്ന് യുഗങ്ങൾ ഇനിയും എത്ര ഞാൻ കാത്തിരിക്കണമെന്നറിയില്ല. താങ്ക് യു. 2 minutes more. Okay. That poetry is translated into Hindi and it will be soon releasing. So you have to wait for another 2 months. No, it tells about, Vijagiri. Vijagiri means you have seen when you open the window, you can see some, what is it called as Vijagiri in Hindi? So kya bolte hain? No, that is, very sorry. I will try to bring that poetry later. So, can I go with the lullaby which was written for the intersex children? Okay. It was already in Hindi. I can just start in Malayalam. Aanalla pennalla kanmani ne, ende thenmani allo thenmani. Aadurayamende neermani kandu kalam nalgiya ponkani ne. നന്മയും തിന്മയും വേർതിരിക്കണം, കള്ളികൾക്കപ്പുറം നീ വളരേണം. പൊരുളിൻ്റെ പ്രതിബിംബമാകേണം, നീ നീയായി തന്നെ നിറയേണം. മകനല്ല മകളല്ല മാരിവില്ലേ, മാറോട് ചേർക്കുന്നു ഞാൻ നിന്നെ.
നൽകുന്നു നിറുകയിലൊരുമ്മ ജന്മസാഫല്യത്തിൻ 100 ഉമ്മ. തളരല്ലേ തഴയ്ക്കട്ടെ നിന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ, താങ്ങായി മാറട്ടെ നിന്റെ ജന്മം. ശാപമല്ല പാപമല്ല ഓമനെ നീ, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുദിച്ച ആദ്യ താരം ഭാഗ്യതാരം നീ. ഇറ്റ് മീൻസ് ഓൺലി ദിസ് ലൈക്ക് ना बेटा ना बेटी तुम मेरे आंखों की तारे है. That is what that poetry means to. And it's not just a son or a daughter, but it is Indradhanus. Please see your children as Indradhanus, and don't throw your children for being intersex, because it is not a privilege to be a man and a woman. Thank you. Thank you. Well, I just want to say that transgendered people are treated less than human, and Amnesty International, which was meant to free political prisoners, has now taken up the cause of transgendered people throughout the world, because they have to treat it just like us, not as less than human. We have 10 minutes. I'm going to throw open the thing to questions. You please give the mic to the audience. Somebody please give the mic to the audience. And speak into the mic, and just don't make comments. We have only 10 minutes. Ask clipped questions which people can answer. Hi everyone. My question is to Manavi ma'am. Your work is so tremendous, and I believe that the question I have, you are the right person to give the answer. Vasudendra here pointed out a lot of challenges that the community is facing right now, and one of the major challenges for the community is the internal phobia that we all have. You know, trans people will have towards biphobia, bi people will have towards transgender or non-binary. Do you agree that there is a lot of internal phobia within the community, and what are the solutions according to you to end this internal phobia within the community? हेलो आते फोबिया तो मेरे पास भी है, हम लोग को पास मेरे कैसे फोबिया है. हमारे जो वाल्मीकि जी है, वाल्मीकि जी बोल रहे हैं कि जो ट्रांसजेंडर तो हमारे संस्कृति में है, तो हमारे संस्कृति में हमारे ट्रांसजेंडर है, ठीक है, लेकिन हम लोग कैसे करते हैं. तो मल्लिका जी क्या बोल रहा है, जो ना गवर्नमेंट के इंडिया गवर्नमेंट के इसे सोचते हैं कि जो क्वेयर के लिए कोई काम करिए. क्वेयर कहाँ से आ रहा है, तो अमेरिका से आ रहा है. एलजीबीटी कहाँ से आ रहा है, अमेरिका से आ रहा है. और हम लोग बोल रहे हैं कि हमारा इंडियन संस्कृति है ये, लेकिन इसे जो वितर्क है इसलिए तो फोबिया आ रहा है. फोबिया तो हम लोग सृष्टि करते हैं इधर बैठ के. हम लोग बोलते हैं कि जो हमारी जो संस्कृति है उधर ट्रांसजेंडर है. हम लोग मैं खुद बोल रही हूँ, ये मैं दुर्गा से आते हैं, तो दुर्गा तो कई एलजीबीटी से दुर्गा नहीं मानते हैं, एलजीबीटी तो आते हैं अमेरिका से. तो ये हमारा पास ये कंट्राडिक्शन है. कौन सा पास में रहोगी, देश में रहोगी ना विदेश में रहोगी. हमारा सब कॉन्शसली क्या है, कॉन्शसली हम लोग इंडियन है, हम लोग का जो ट्रेडिशन, our culture, are proud for our culture, we are proud for our language. But when my subconscious में क्या चाहते हो, जो अमेरिकी का टिकट मिल जाएगा तो चल जाएगा, हाँ एनजीओ लेके जाएंगे. हम तो जौन कैद है. What do you suggest was the solution to सॉल्यूशन पहले हम लोग को खुद, आप लोग खुद प्रश्न करिए हम कौन सा साइड लेंगे, अमेरिका का साइड ना इंडिया का साइड. इंडिया का साइड लेंगे तो क्वेयर क्या कौन सा मान जाता है, क्वेयर कौन सा है जो अद्भुत होता है. हम लोग का अद्भुत होता है, आप सोचते हैं जब लोग अद्भुत, ये तो फोबिया का बात है. क्वेयर तो फोबिया का बात है. तब तो आप तो खुद बोल रहा है हम लोग क्वेयर है, क्वेयर है. Not shut up time. It is not shut up time. Please, sir. I am Suresh Patwa, लेखक हूँ भोपाल से. I want to ask one question from Vasundhara. Okay. Your LGBT society is fighting for the rights of LGBT. Okay? So rights never comes without duties. You have not talked about the duties towards the mainstream society. Sir, I'll ask you one question. Okay? To get married, you have a right.
what duties you did to get the right of a marriage, and why it has been denied to me. You tell me that first. Okay, and second thing, and you assume everything is granted. Everything you are, it's Brahmin saying that everything is good. But there is a Dalit who is sitting there, who is not having all those facilities which will never aware. So LGBT community is not asking for any extra rights. They're asking for what you people are enjoying, the same thing has to be extended to us. Why we are asking for it? It's their constitution right for me. Living the marriage is a constitution right for me. With whom I marry is immaterial for you. Why the marriage is required? That is very important. Though I personally do not subscribe to the marriage concept because it's a failure, but system. But why do I prefer is, when I counsel the so many people, the gay men, when they come out to their parents, the worry is not that my son has become a gay. Most of the parents worry that who is going to be there with him when he becomes old. That is the fear most of them have. If that is the case, if marriage can sort out that issue, right? Why not them have someone to take care? Nobody else will come when he falls for sick. Who is going to take care of him? Right? So that we need to do. First, we need to understand some of the things, the struggles which they have gone through. I'll just give one example. Though I'm not supposed to compare two oppressed communities, just for the reference I'm taking it up here. In case of a Dalit, he is so much oppressed and he has been downtrodden, that's all fine. But one advantage he will have. The advantage which he will have is his mother will be a Dalit. His father will be a Dalit, his sister will be Dalit, his neighbor will be Dalit. If I am a gay, I am alone gay. My father may not be gay, my mother may not be gay, my neighbor may not be gay. I don't know who is gay. I didn't know the word of gay till I joined engineering, and till the final year of engineering, I didn't know even what does that word means. Because I come from a Kannada medium. I think so you have all those rights, sir, which you don't have. I think my question is wrongly understood. Okay, sir. Rights always comes with the duties. What duties I'm asking you? Asking you to know you as a man and you are eligible. A third question, please. A third question, Sir, can I please. say something? It's very important. Can I say something? The rights and duties. I don't want to lecture on rights and duties. Please ask a question or go home. Who wants to ask a question? Please ask. My question is, you feel you are deprived. I feel not you. We are deprived to listen you, to understand you. You people are not responsible to deprive us for all such beautiful things about you. Someone was asking me what is what is the English for Vijagri, right? It means hink. That is, it stands in between the inner world and the outer world for a window. So the poet is actually like opening the window, and she says that there is a long difference, like there is a long journey between the poet and the lover. Okay, thank you. So we'll take another question. We take another one or two questions. Yeah. सर जा रहे हैं. मैं बताना चाहूँगी कि सर मैं बताऊंगी हमारे राष्ट्र के प्रति हम ड्यूटी कर रहे हैं. मैं अपने छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बता रही हूँ. हमारे यहाँ 25 लोग पुलिस कांस्टेबल में हैं. मानवी जी कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, और हमारे छत्तीसगढ़ में 2 लोग आर्मी में हैं. मैं खुद एक रिहेबिलिटेशन सेंटर की काउंसलर हूँ. 1000 बच्चों को पढ़ाया है. बिल्कुल सही. तो कॉन्टिनेंट्स पे मैंने ड्यूटी नहीं की है. बिल्कुल आपकी. तो ये बताना जरूरी है कि हम ड्यूटी कर रहे हैं अपने राष्ट्र के प्रति, बट
लोग नहीं देख पा रहे हैं। बस ये हर जगह जब ताले लगे हुए ट्रांसजेंडर्स के लिए, कहीं काम नहीं मिल रहा है, सड़क में खड़े होकर ताली बजा रहे तो आपको लग रहा है हम ड्यूटीज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। एक छोटे मासूम बच्चे को आप घर से निकाल के फेंक देते हैं कचरे में, उसको ट्रांसजेंडर बहनें आके पढ़ा लिखा रही हैं। एक समलैंगिक इंसान को आप धर्म और जाति से बिल्कुल बहिष्कृत कर दे रहे हैं, वो अंदर अंदर घुट रहा है, तड़प रहा है, आप उसको कुछ दे नहीं रहे और उससे बदले में इतना मांग रहे हैं। हम बांझ से ही, हम पेड़ या फल या आपको कुछ भी फ्रूट नहीं दे सकते हैं, लेकिन याद रखिए हम लकड़ी रखते हैं, आप लोगों को सहारा जरूर दे सकते हैं, बेशक हम बांझ है। Revati wants to make a comment for. सब पहले हमको इंसान का तरीका देखना, बाद में ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन, बाद में एक्स्ट्रा। आपका खून ब्लड रेड कलर बोलेगा तो हमारा खून भी रेड कलर है। आपको मारेगो तो आपको दर्द लगेगा, मुझे मारेगो तो भी दर्द लगेगा। देख, हम आकाश से किरकी नहीं आने वाला नहीं है। ये मेरा माँ बैठा है, मेरा बाप बैठा है, मेरा भाई बैठा है, मेरा बच्चा बैठा है इधर। हम विद इन आवर सोसाइटी, हम नॉट आकाश से नहीं गिरा है, हम सब इंसान हैं। अभी देख, लेक्चर में गया, क्यों वो नहीं रुका वो काम में? तुम लोग ने किया है। एक करते हैं, काम देते हैं, बाद में वो काम में रहने के लिए नहीं छोड़ता है, अपना खुद काम निकाल के बाहर जाना, ऐसे मेंटली टॉर्चर तुम लोग देते हैं। मैं एक एनजीओ में काम कर रही थी, ऑफिस असिस्टेंट थी, बाद में प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर थी, बाद में मैं डायरेक्टर बन दी थी। ये सिस कम्युनिटी क्या बोल रही थी मालूम है? ये हिजड़ा है, ये चेक्का है, इसको अंग्रेज नहीं आता है, ये डायरेक्टर बन गया। क्यों? अंग्रेज नहीं है तो हम, तुम लोग पीएचडी पढ़ रहे हैं, तुम लोग एमएसडब्ल्यू पढ़ रहे हैं, किताब से पढ़ रहे हैं, हम फील्ड में जाके हम काम कर रहे हैं। इतना एचआईवी एड्स को कौन बंद किया है? अपना कम्युनिटी। हम जाको कांडम डिस्ट्रीब्यूट किया, कांडम कैसा लगाना का हम सिखाए। हमारे किताब को सब आप पढ़ के देखो, कौन ऐसा किताब लिखता है? एक विमेन के ऊपर रेप होएगा तो वो जगह कैसी रहती है, डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है, ये सब हम ओपन से लिखा है। आप सुनो, कोई भी घर से बाहर निकाल को फुटपाथ में कभी सोया आपने? ओढ़ने के लिए कुछ नहीं है, खाना नहीं है, ये जिंदगी भी किसकी भी ऐसी लाइफ नहीं है। हमारा लाइफ ऐसी लाइफ है। तुम लोग काम देते हैं, नौकरी देते हैं, बाद में उसको निकाल के बाहर जा बोलता है। तुम लोग बोलते हैं और पीक क्यों मांगता है, सेक्स और क्यों नहीं क्यों करता है? Thank you. This was a very hot session. I'm sorry if you got heated up. I did too. Please forgive me. Have a good lunch. Have a good day. Thank you so much, Mr. Hoshang Marchand. We are grateful to all the panelists, A. Revati, Dr. Manvi Bandyopadhyay, thank you so much, Mritika Chatterjee, Sanjana Simon, Vasudhendra, and Vijay Raj Mallika. Thank you so much. Just come forward for a group photograph. और देवी सज्जनों, आप सबका डॉक्टर के श्रीनिवास राव जी और तिवारी साहब को लेकर आप आए, आदरणीय विश्वनाथ तिवारी जी और प्रोफेसर दीक्षित, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि एक ग्रुप फोटोग्राफ में वो भी साथ मंच पर आएँ। और आप सभी को एक तो ये सूचना हम देना चाहते हैं कि शाम को 6 बजे, चूँकि उन्मेष का आज आखिरी दिन है और इसका समापन होगा इतने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एशिया के सबसे बड़े लिटरेरी फेस्टिवल का, तो शाम 6 बजे का समय है जब उसका कंक्लूडिंग वैलिडिक्टरी फंक्शन कह सकते हैं आप, इसी गौरांजनी ऑडिटोरियम में सभागार में होगा। तो आप सब आएंगे तो अच्छा लगेगा। शाम 6 बजे का समय है, तो वो समापन सत्र आप उसकी भी गरिमा बढ़ाएं। अभी आप भोजन के लिए, लंच के लिए ज़रूर पधारें और 2:30 बजे से थोड़ा पहले आ जाएंगे तो हम समय से अपना अगला सेशन शुरू कर लेंगे। 2:30 बजे का जो सेशन है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। द कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया इतना वास्ट है, लेकिन उसको एक सेशन में समेटने की कोशिश इसलिए हमें लगता है कि हम कर पाएंगे सफलता के साथ, कि उसमें बहुत ही रिनाउंड एमिनेंट स्कॉलर्स जो हैं फ्रॉम डिफरेंट फील्ड, स्पेशली फ्रॉम कल्चर, दे विल बी देयर हियर ऑन द स्टेज। तो भारत की सांस्कृतिक विरासत को लेकर, कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया को लेकर हमारा 2:30 बजे का जो सेशन है, आज का तीसरा सेशन, आप प्लीज़ उसका हिस्सा ज़रूर बनिएगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ ज्वाइन अस।